So this is the question number 6 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic basic computer organization. So in this particular question it has been asked, out of the given four option which of the following is responsible for arithmetic and logical operation. तो अगर मैं बात करूं सीपीयू की, तो सीपीयू बेसिकली आपका दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट वन इज एएलयू विच इज स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड सेकंड वन इज कंट्रोल यूनिट. तो बेसिकली जो एएलयू है वो है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. ऑन दी अदर हैंड अगर जो कंट्रोल यूनिट है वो चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है आपके सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, यानी जितनी भी बसेस हैं आपके अंदर, डाटा बस हो गई, एड्रेस बस हो गई और इवन कंट्रोल यूनिट कंट्रोल बस हो गई, ये सारी किस कौन कंट्रोल करता है? आपका कंट्रोल यूनिट. Hence, for this one, option number B is the correct one. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then. Thanks for your time.